everyone, welcome back to another video of MK tutorials. So in the last video we have seen about classical complement pathway. Now in this video we are going to learn about alternative complement pathway. So let us start with the video. Firstly, we are going to revise about the last video, that what we have seen in the last video. We have studied about the complement system, what is complement system, how it is activated, what are the crucial functions of it, and various things. We have learned about classical complement pathway. We have learned about complement proteins, how many complement proteins are there. So now let us start with the video. So let me introduce you to the alternative complement pathway. The main thing is that this pathway is antibody इंडिपेंडेंट पाथवे. मतलब इस पाथवे को स्टार्ट होने के लिए हमको कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं होती. ये पाथवे जो है इनिशिएट होता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ C3 and it does not require any antigen antibody complex or another factors. So there are some factors which are responsible for this pathway activation. That is, there are certain bacterial endotoxins, teichoic acid, immunoglobulin A and D, cobra venom, parasites, virus and other virus infected cells. तो ये सारे जो एक्टिवेटर्स है इस पाथवे को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं. The pathway is very crucial. This pathway is very crucial, and there are four main factors which are central to this pathway. First factor is C3, which is cleaved into C3A, which is an anaphylatoxin, and C3B, that is opsonin. Second factor is factor B, which binds to C3B, that is an opsonin, and then it is cleaved by factor D. Now factor D, third factor is factor D, which is a serine protease that cleaves factor B. And lastly, properdin, which stabilizes the C3 convertase, that is a complex of C3BBB. Now this process begins with the spontaneous C3 hydrolysis to C3H2O when a pathogen enters the system, and this intermediate, that is C3H2O and pathogen, it binds to factor B, which is then cleaved by factor D to form a soluble C3H2O BB complex. ये जो complex बना है, this complex then cleaves more C3 molecules into C3B and C3A. So as I've explained you in the last video that C3B is a heavier molecule, C3A is a lighter molecule. So this initiates the cascade. तो यहाँ पर पाथवे को स्टार्ट होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में हमने देखा था. नाउ ये जो कैस्केड स्टार्ट हुआ है, नाउ सरफेस जो बैक्टीरियल सरफेस होता है, बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर C3B जो है वो बाइंड हो चुका है. Now this recruits factor B and it leads to the formation of C3B BB C3 that is C3 convertase. अब ये जो C3 convertase है, C3 convertase का काम क्या होता है? C3 convertase का काम होता है to convert C3 into C3A and C3B. Now what happens is कि इसके बाद प्रोपर्डिन, जैसे मैंने बताया था, वो स्टेबलाइज करता है C3 convertase को and it significantly amplifies C3 cleavage and C3B deposition on microbial surfaces, which ensures a robust and sustained immune response. Now how is this thing regulated? So host cells जो है वो बहुत सारे regulatory proteins के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे कि फैक्टर H हो गया, फैक्टर I हो गया, जो कि C3B को क्लीव होने से रोक देते हैं. अगर C3B पहले ही क्लीव हो गया तो वो जाकर बैक्टीरिया पर बाउंड नहीं करेगा. उसके अलावा DAF, CD55 and MCP, that is CD46, which accelerates C3B degradation on host membranes. मतलब C3B को डिग्रेड होने के जब सारी चीज़ें हो जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बैक्टीरिया भी सब कुछ क्लियर हो गया, मर गया, उसके बाद ये जो फैक्टर्स है ये C3B के डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं. उसके बाद CD59 जो कि
मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है ताकि ये चीज़ आगे तक ना जाए। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ रहे हैं और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो क्या करता है कि वो बैक्टीरियल सेल्स के साथ साथ हमारा जो नॉर्मल सेल्स होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है, उसको भी डिटेरियोरेट करता है। तो ये जो CD59 है, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, या थेराप्यूटिक टारगेट क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो अगर अल्टरनेटिव पाथवे का डिसरेगुलेशन हो गया, तो देर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक AHS एंड AMD। C3 glomerulopathy involves complement dysregulation, and therapies target components like factor D or C5, offering new avenues for treating these conditions. सो यहाँ पर मैंने तुमको एक ओवरव्यू या एक जस्ट डाली है अल्टरनेटिव पाथवे का, विच इज़ दैट द थिंग स्टार्ट्स विद द बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जब C3 बाइंड करेगा, उसको क्लीव करने के लिए फैक्टर डी एंड फैक्टर बी विल प्ले अ रोल। देन उसके बाद ये सारे कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे that is binding of complement proteins to microbial cell or cell surface or antibody. Then after that formation of C3 convertase in कैसे वो फॉर्म होगा C3b एंड BB। उसके बाद क्लीवेज ऑफ C3/C3 कन्वर्टेज इंटू C3a एंड C3b, एंड आफ्टर दैट ये जब कॉम्प्लेक्स टूटेगा, लाइक C3a C3b जब टूट गया ये, उसके बाद C3b विल बाइंड टू BB। देन आफ्टर दैट इट विल फॉर्म C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज बनने के बाद फिर C5 का कन्वर्जन होगा into C5a and C5b. After that C5 will bind to the particular complex, and उसके बाद ये जो चीज़ है ये एक्टिवेट करेगा C6 C7 C8 C9, just like the classical complement pathway, and after that membrane attack complex बनेगा, and then MAC will lead to the the डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्ट होने के लिए कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ज़रूरत है तो किसकी है, मुझे C3 की ज़रूरत है। तो जो कि बैक्टीरिया जो जैसे ही एंटर करेगा इनटू द सिस्टम, तो वो सीधा के सीधा C3 को एक्टिवेट करेगा, एंड देन जितने भी फैक्टर्स मैंने बताया, फैक्टर B, फैक्टर D, प्रोपेडिन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, और एक्टिवेट होने के बाद इस पाथवे का स्टार्ट होगा। बाकी एंडिंग इस पाथवे की इट इज़ सेम एज द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एंड डिसरप्शन ऑफ द पर्टिकुलर पैथोजन. So I hope you have understand this video. If you have understand this video, if you have any doubt, you can leave me in the comment section. Till then, like the video, share this video to everyone, and till then, if you are new to the channel, please subscribe my channel and hit the bell icon, तो जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो तुम लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले. So till then, bye bye.